Hello everyone. So as informed, I'm going to read with you all this book called as You Can Heal Your Life by Louise Hay. A quick behind the scene why I want to read this book is I found this book in my home from 19 years back. I bought this book when I had no idea who Louis Hay is or what this book means. So, this was the first self help book I think I got for myself, and which I was not very much aware of, and I never read it. So, today, when I look back, I teach all about how you should love yourself and how to increase your self-worth, how you can accept yourself. I'm into spirituality, into emotional healing, and in the space of physical, or holistic wellness is what my motto is for each one of you. So when I was just looking at this book, I realized that from 19 years back, this book had attracted me, and today I found it because this was the right time, right divine time. That's what Louis Hay say, that your purpose always finds you. So I just wanted to uh not give this kind of intro. This is just 1 or 2 minutes of whatever I'm talking about of uh my coming into this healing space from the corporates. So I thought for next 20 days, 15 to 20 days, I consistently I'll read through these chapters, and we can figure out like what is the best thing that Louis Hay is saying to change our lives. We all have that power within. We just need to get that instincts. How? Okay, so I'll read this book starting from chapter 1, and next 15 to 20 days I'll be consistent enough to continue this journey with you. Thank you for being here, thank you for watching, and let's begin. So the first chapter she talks about is what I believe. The gateways to wisdom and knowledge are always open. So I'll read it, and if there is some explanation, I'll do it. Okay. Life is really very simple. What we give out, we get back. That nature of the law of attraction. What is given is attracted. The more you are into gratitude, the more you will receive that kind of respect. So, what we think about ourselves becomes the truth of us. I believe that everyone, myself included, is responsible for everything in our lives, the best and the worst. Every thought we think is creating our future, and that's why it is always said that our thoughts shape our beliefs. Based on our belief system, we take actions, and that's how we desire the best thing in our life. Okay, so even if you're seeing something worst happening around you, it might be somewhere your thoughts and beliefs that take has made you do some kind of activities which you are not liking it now, which we call as karma. So again, I'm not going to that deep. Let's come back. So every thought we think is creating our future. Each one of us creates our experiences by our thoughts and our feelings. The thoughts we think and the words we speak creates our experiences. We create the situations and then we give our power away by blaming the other person for our frustration. Now notice, whenever you are frustrated in your life, is it really you? Uh, that particular moment, just observe yourself. That's how you will get the self awareness. Just observe yourself, whether you are blaming someone else for your frustration. And it is a human nature, so just don't judge yourself. Just understand that
Yes, if you are frustrated, might be you are blaming either the situation or some person. But understand this, what Louis Hay says: no person, no place, and no thing has the power over us, for we are the only thinkers in our mind. When we create peace and harmony and balance in our mind, we will find it in our lives. Which of these statements sounds like you? People are out to get me. Everyone is always helpful. Just see what statement is just pulling you towards people are out to get me, or everyone is always helpful. See, each one of these beliefs will create quite different experiences. And we are not at all judging here with what kind of, what kind of belief you are having. So there is no judgment, but the experiences will be different. What we believe about ourselves and about life becomes true for us. The universe totally supports us in every thought we choose to think and believe. Put another way, our subconscious mind accepts whatever we choose to believe. They both mean that what I believe about myself and about life becomes true for me. What you choose to think about yourself and about life becomes true for you. And we have unlimited choices about what we can think. When we know this, then it makes sense to choose. Everyone is always helpful rather than people are out to get me. Okay, so क्या नहीं सोचना है is like everyone, so sorry, क्या सोचना है is everyone is always helpful. जितना आप लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, उनको पॉजिटिव दोगे, आपकी थॉट्स ही रियलिटी बनती है। राइट, तो हमें क्या सोचना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट्स दोनों गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस गलत होंगे अगर आप ऐसा स्टेटमेंट लोगे, सोचोगे। द यूनिवर्सल पावर नेवर जजेस और criticizes us. It only accepts us at our own value. Then it reflects our beliefs in our lives. If I want to believe that life is lonely and that nobody loves me, then that is what I will find in my world. And see, देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एनएलपी में भी आता है, जिस जो मेरी लाइफ को बदली है। मतलब आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मेरे लिए एंटायर वर्ल्ड एक एक इंसान के आगे पीछे था। एंड इट वाज लाइक एवरी टाइम आई यूज टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ मिजरी इन माई लाइफ। मैं लोनली हो जाती थी। क्यों भाई? क्योंकि देर इज ओनली वन पर्सन who might be loving me less than what I expected. Again, mark my words, what I expected, उससे अगर किसी ने कम किया तो मेरे लिए था कि मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता। So I had this kind of thoughts for quite a long time. Might, if you are hearing this, this is the moment when you should just stop or release this thought. ओके, सो हमारा वर्ल्ड एक पर्सन नहीं डिफाइन करता है, एंड आई शुड नेवर से दैट नोबडी लव्स मी. However, if I am willing to release that belief and to affirm for myself that love is everywhere and I am loving and lovable, and to hold on to that new affirmation and to repeat it often, then it will become true for me. Now, loving people will come into my life. The people are already in my life will become more loving to me, and I will find myself easily expressing love to others. ये बहुत बड़ी बात है, and I have repeated this consciously I don't know how many times. मतलब लव इज एवरीवेयर। हर चीज से मुझे प्यार हो जाती है, हर चीज से मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज मेरे सामने आया है मुझे प्यार करने के लिए। सी दिस बुक अराइव टुडे, it was a moment of my, the lowest
uh, this morning, like I was l- lowest in my energy. The energy was draining inside me because something that has happened yesterday, which I was not uh, able to cope up with. ठीक है? So it was like that was the situation in the morning when I found, not even morning, after like graphotherapy practice, it was almost one and a half, 1:30 p.m. I think around that p.m. I was randomly sitting in my room and I was just observing that कि क्या किस चीज को ऑर्गेनाइज किया जाए एंड आई फाउंड दैट देर इज ओनली वन थिंग जो कि मेरे बचपन के all the certificates and all everything, books and everything was kept in a plastic bag. तो ऐसा था तो मैं रैंडमली वहां पर गई और रूम में, और मैंने बोला कि आज इसको ठीक करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड वाइल आई ऑर्गेनाइजिंग आई फाउंड दिस बुक एंड यू वोंट बिलीव कि उसके बाद मेरी एनर्जी क्या हाई गई थी. इट वाज जस्ट द बुक. लेकिन मुझे प्यार इस चीज से हो गया कि जो बुक मैंने 19 साल पहले खरीदा वो कैसे आज मेरे हाथों में आया है. एंड आई लिटरली वांटेड टू स्टार्ट रीडिंग दिस. जस्ट याद आया कि कितने लास्ट 2 to 3 years बैक आई स्टार्टेड यू नो हियरिंग हर अ लॉट एंड आई नेवर रिकग्नाइज्ड कि अरे इसका तो किताब मैंने कभी खरीदा होगा. तो इट्स नॉट लाइक आपको सिर्फ लोगों से ही प्यार करना है. anything. So everywhere is love. Now this book was love, holding that space. और जैसे ही मैं वहां गई और देखी और वो प्यार मेरे को मिल गया. तो ऐसे हमें अपने लाइफ को इतना लविंग बनाना है. और मैं अपने आप को ऑल टाइम बोलती आई एम वेरी लवेबल बिकॉज आई नो व्हेन यू स्टार्ट चूजिंग योर सेल्फ यू स्टार्ट गेटिंग डिस्टेंट फ्रॉम पीपल अराउंड यू. और ये मेरे साथ बहुत ज्यादा हो रहा था. तो आई वॉज ओनली अफर्मिंग वन थिंग कि जितना भी लोग मेरे से दूर जाए I don't have a problem with that, but I know I'm very loving. मेरे लिए सबके लिए बहुत ज्यादा प्यार है एंड आई एम एट द सेम टाइम आई एम वेरी लवेबल. तो ये दो थॉट्स हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहा. So, not just while talking, reading this, but I'm realizing कि how I used to affirm this every time, like how she says कि you should do this on repeat. Otherwise, आपके conscious mind में एक ही चीज रहेगा कि यार मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है ना. इवन दो कोई में व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग यू कोई में कौन आता है, तो यू माइट टेक 1 or 2 पर्सन नेम, हस्बैंड हुआ, बच्चे हुए, या किसी की वाइफ हुई, या किसी के पेरेंट्स हुए. दैट काइंड ऑफ नेम्स विल ओनली कम अप. सोसाइटी का नाम आप कभी नहीं लाओगे उसमें कि कोई प्यार नहीं करता. तो इट इज ऑल अबाउट like what kind of beliefs we carry, what kind of thoughts we carry. ठीक है. Next is, most of us have foolish ideas about who we are, and many rigid rules and how life ought to be lived. इस पे मैं बाद में बोलूंगी क्या अक्सर होता है, बट इट इज फुलिश आइडिया. क्योंकि जब कोई बहुत ज्यादा एडमेंट हो जाते हैं ना, तो इट बिकम्स टफ टू लिव द वे यू रियली वांट. क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि रूल बुक से ही चलना है. This is not to condemn us, for each of us is doing the very best we can at this moment. It's all about कि कौन किस थॉट से चल रहा है. किसी का थॉट प्रोसेस ये चल रहे हैं कि नहीं, मैं तो अपने चाइल्डहुड कंडीशन था कि मुझे डिसिप्लिन में ही रहना है. कुछ लोग ये सोच करके लाइफ जीते हैं कि ठीक है, कैसे मुझे उतना रूल से मतलब नहीं है, चीजें हो जानी चाहिए. तो कोई गलत नहीं है. इट्स ऑल अबाउट वॉट एवर यू आर नोइंग राइट नाउ अबाउट योर सेल्फ. ठीक है. इफ वी न्यू बेटर, if we had more understanding and awareness, then we would do it differently. तो इसलिए कभी भी किसी को जज नहीं करो. इट इज मोर अबाउट कि अगर आपके साथ जो भी सिचुएशन में हो रहा है, किसी के वजह से अगर हो रहा है,
तो भी आप कैसे उस वजह को उस पर्सन के ऊपर ब्लेम नहीं करोगे? कैसे नहीं कर सकते हो? इट इज ओनली दैट यू कीप ऑन सेइंग ऑफ अगेन, यू नीड टू change this thought inside you of someone is wrong, से कि वो उतना ही मेरे को बोल पा रहा है जितना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग है या उसकी अवेयरनेस है। और सडनली आप देखोगे कि अगर ये थॉट आ गया तो यू विल नॉट ब्लेम दैट पर्सन। सो प्लीज डोंट पुट योर सेल्फ डूइंग फ्रॉम, यू नो, फॉर बीइंग वेयर यू आर। नेवर पुट डाउन योर सेल्फ। So it is like, please don't put yourself down for being where you are. The very fact that you have found this book and have discovered me means that you are ready to make a new positive change in your life. And just be grateful for this. Just be grateful. मैं बस इतना ही बोलूंगी कि लाइफ में अगर कोई चीज भी आपके पास पहुंच रही है, अगर आप ये चीज सुन रहे हो, तो दिस मीन्स समथिंग। आप बैठ के नेटफ्लिक्स भी कर सकते हो, but you are, if you are listening me, if you are listening this book, तो it is definitely, it means कि आपको इस टाइम पे चेंज चाहिए। Acknowledge yourself for this. Men don't cry, women can't handle money. What limiting ideas to live with? अरे मैं बोलती हूँ कि these are all limiting thoughts. Men don't cry, but उनको रोना है तो वो कहाँ जाएंगे? अगर आप इस कॉल में बैठे हो और आप समझ रहे हो कि हाँ, कहीं ना कहीं पे मुझे चीजों को एक्सप्रेस करना है, बट आप क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो? इट इज ओनली बिकॉज कि एक रूल कहीं से आपने सुना है कि अरे मैं रो दूंगा तो मेरी वाइफ क्या सोचेगी, या मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरा बच्चा क्या सोचेगा। बट आई जस्ट वांट यू टू रिलीज दिस लिमिटिंग बिलीफ। वुमेन कान हैंडल मनी। आज भी बहुत बहुत लेडीज ऐसी हैं जो बिजनेस में नहीं करना चाहती हैं। क्यों? रिस्क है। उनकी ही जगह पे हस्बैंड 10 लाख 20 लाख डुबा दे, वो चल जाता है। उनको घर खरीदना है, करोड़ों के घर खरीद लेंगे। लेकिन विमेन अगर अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट की तो इट इज लाइक कि वो पैसे बर्बाद कर रही है। यस, दैट इज व्हाट इट मीन्स ना। इवन इफ यू आर अर्निंग, इफ यू आर डूइंग फॉर एवरीवन, बट जहाँ आपको अपने ऊपर खर्चा करने की बात आती है तो ऐसा लगता है कि मैं तो हैंडल ही नहीं कर सकती मनी, या हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, या यू यू हैव दैट काइंड ऑफ लिमिटिंग बिलीफ। सो इस थॉट को भी हमें हटाना है। When we are very little, we learn how to feel about ourselves and about life by the reactions of the adults around us. It is the way we learn what to think about ourselves and about our world. Now, if you lived with people who were very unhappy, frightened, guilty, or angry, then you learned a lot of negative things about yourself and about your world. I never do anything right. It is my fault. If I get angry, I am a bad person. See, beliefs like this create a frustrating life. आपको अगर अपने आसपास या अपने से फील हो रहा है कि देर इज समथिंग दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग, दैट इज दैट इज नॉट बीइंग गुड इन योर लाइफ, तो आप वो नोटिस करो क्या हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ अस विल फिगर आउट, अगर हम अपने, मतलब, आप हर साल अपना पीछे जाओ। इसलिए मैं बोलती हूँ पैटर्न्स बहुत जरूरी है लाइफ में चेक करना। ये कितने बार हुआ है? अगर आप किसी चीज से आज दुखी हो कि आपके पास पैसे नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितने साल से चला आ रहा है और आपकी थॉट्स क्या है पैसों के लिए? If it is like every time you are blaming yourself rather than anyone else, you're just blaming yourself। लेकिन वो चीजें ठीक हो ही नहीं रही है। इट्स माई फॉल्ट। अगर बार बार तुम ये चीज बोलते हो तो आपने क्या चीज वो देखा है, और किस किस एनवायरमेंट से आप आए हो जहां पर आपके भी आपके सोर्स, योर पेरेंट्स और समवन इन योर हाउस हु इज वेरी क्लोज, वो बार बार खुद को ब्लेम करते हैं। ऐसा आपको फिगर आउट करना है। बिकॉज
when we are very little, we learn how to feel about ourselves. इसलिए मैं अपने अपने सन के लिए आई से कि आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर दिस पैटर्न्स, कि अगर मैं ऐसा फील कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, सो दैट आगे चल करके वो ये चीज फील ना करे. I was low at self esteem at the point when my son was born. तो मेरे को एक ही चीज था कि सेल्फ एस्टीम तो बढ़ाना है, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना है. एंड दिस गाय शुड नॉट टेक दैट. एब्जॉर्ब चिल्ड्रन, ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब वेरी क्विकली. सो हमें ये चीज बहुत नोटिस, और इफ यू जस्ट फील कि अरे ये तो मेरा, what it is my emotions, my feelings, how will my child know? So this is how your child knows, कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपको देख रहा है और वो एब्जॉर्ब करते जा रहा है. दिस इज हाउ यू हैव एब्जॉर्ब्ड if any of the negative feelings you have from your parents. इसके लिए आपको बैठना होगा. ठीक है. So when we grow up, we have a tendency to recreate the emotional environment of our early home life. This is not good or bad, right or wrong. It is just what we know inside as home. We also tend to recreate in our personal relationship the relationships we had with our mothers or with our fathers, or what they had between them. Think how often you have had a lover or a boss who was just like your mother or father. और ये मैंने नोटिस किया है, एंड इट इज वेरी क्लोजली नोटिसबल. अगर आप भी आज ही ये पैटर्न्स नोटिस करना स्टार्ट करना. सी वी आर नॉट रैंडमली attracting people in our life. It is mostly coming up from our source. तो हमारा सोर्स कैसा है, ये अगर आप उनके बारे में रीड आउट करोगे तो आप उसी तरह के पैटर्न्स को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर ब्लेमिंग योर बॉस और योर योर लवर, योर एनीवन, मतलब जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, आप जस्ट नोटिस करो कि कौन सा पैटर्न है जिसको आप नहीं, मतलब अपने पेरेंट्स में नहीं पसंद करते थे और वो पैटर्न आपको उसमें दिख रहा है. और ये भी सिर्फ नहीं है कि नहीं पसंद करते हैं, इट इज लाइक इन बोथ वेज, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यू विल सी. समटाइम्स ऐसा आएगा कि अरे यू आर एग्जैक्टली लाइक माई मॉम. आपकी हो सकता है हस्बैंड्स अपनी वाइफ को हमेशा बोले कि तुम मेरी मॉम की तरह ही खाना बनाते हो. मे बी वेरी नाइस, मे बी नॉट वेरी ग्रेट, इसलिए मैं बाहर खाता हूँ. सो कुछ भी हो सकता है. जस्ट फिगर आउट दैट पैटर्न. वी ऑल्सो ट्रीट ourselves in the way our parents treated us. We scold and punish ourselves in the same way. You can almost hear the words when you listen. We also love and encourage ourselves in the same way. If we were loved and encouraged as children, you never do anything right. It is all your fault. How often have you said this to yourself? You are wonderful. I love you. How often do you tell yourself this? इसीलिए ब्रेकिंग द पैटर्न इज सो इम्पोर्टेंट. जनरेशनल ट्रॉमास जो आजकल लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट पे डाल दिए हैं, तो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स मोर अबाउट यू नो अगर आप पैटर्न ब्रेक करने में, अगर आप अपना लाइफ चेंज करना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों को डिफरेंटली देखना चाहते हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो हमारे पेरेंट्स बोलते थे वही सेम वर्ड्स हम अपने बच्चों को बोलने लगे हैं बाय डिफॉल्ट. ऐसा नहीं है कि मैं ये ऐसा चाहती थी, ये होने लगा ना. बट यू कैन चेंज इट, यू हैव दैट पावर ऑफ चेंजिंग. पर वो कब आएगा? द मोमेंट यू रियलाइज कि द मोमेंट यू कैच योर सेल्फ कि शायद दिस वॉज समथिंग आई फेस्ड. अगर मुझे किसी ने बोल दिया या मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, आई वोंट बी सेइंग द सेम स्टेटमेंट टू माई सन, टू माई चाइल्ड. ये जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं था, आप अपने बच्चों से नहीं बोलो. दिस इज वॉट यू नीड टू डू. Okay, however, I would not blame our parents for this. Huh, this is very important.
I remembered the moment I started that kind of posts जहाँ पर मुझे समझ में आया जनरेशनल ट्रॉमा क्या होता है और पैटर्न्स कहाँ से ब्रेक करना है और ये सब चीज़ें जब मैं स्टार्ट की थी, तो एवरीवन थॉट कि आई एम ब्लेमिंग माय पेरेंट्स, या ये कैसे ऐसा कर सकती है, शी इज सेइंग दैट पेरेंट्स आर समवन जिसने ये सब स्टार्ट किया. बट हियर very nicely Louise Hay is also explaining, and I'll explain you this. We all are victims of victims. ये लाइन हमेशा याद रखना, विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स. तो हमारे पेरेंट्स का गलती नहीं है. दैट इज वाई आई एम वेरी क्लियर टू दिस, क्योंकि उन लोगों ने भी कहीं से अब्जॉर्ब किया है. उनके पेरेंट्स हो सकते हैं कि हमारे आंखों के लिए बहुत यू you नो मतलब वो बोलते हैं ना, नानी दादी बहुत अच्छे थे, लेकिन what they have gone through, our parents have gone through with them, we don't know that. तो हमें लेंसेस क्लियर करने हैं, हमें लेंसेस से ये देखना है कि हो सकते हैं वो विक्टिम्स के विक्टिम्स हैं. ठीक है. एंड दे कुड नॉट पॉसिबली हैव taught us anything they did not know. If your mother did not know how to love herself, or your father did not know how to love himself, then it would be impossible for them to teach you to love yourself. और आज के करंट सिनेरियो में यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा मिसिंग है. Till date, I have seen that my mom says, let me ignore myself. Why? Or she does for everyone everything silently, लेकिन वो एक बार भी नहीं बोलती हैं कि let me do it for myself. And the same came inside me. Why should I cook for myself alone? Let me eat some junk, मैगी मंगा लिया या मैगी बना लिया, और चाउमीन खा लिया, just because I don't want it to cook for myself. This is what we need to break. And this is what, even though our parents did not do for themselves, and we are not someone who came up to do it for them, क्योंकि आज भी वो थोड़े से एडमेंट है, हो सकते हैं बहुत पेरेंट्स आज भी बदल रहे हैं और करने लगे हैं अपने लिए. बट you should not stop yourself. They were doing the best they could with what they had been taught as children. If you want to understand your parents more, get them to talk about their own childhood. And if you listen with compassion, you will learn where their fears and rigid patterns come from. Those people who did all that stuff to you were just as frightened and scared as you are. एक 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 चीज मैं बताऊंगी, जैसे बहुत बहुत लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है इस चीज के लिए. व्हेन यू स्लीप, यू नोटिस फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, व्हेन यू स्लीप एट नाइट, व्हेन इट्स नॉट अ विंटर वेदर, समर है, स्प्रिंग है, जो भी है, एंड इफ यू हैव दैट अर्ज ऑफ टेकिंग अ बेड शीट एंड पुटिंग इट ऑन योर सेल्फ, somewhere you are scared. Yes, this is something I'm talking from the experience of knowing the patterns, how you can understand that you are scared. और ये आता ही आता है from your parents. If the not talking about weather and all, it is like you want something to wrap around yourself just to feel secure. ठीक है? So this is what I have got from the experience. Anyways, moving ahead, I believe that we choose our parents. Each one of us decides to incarnate upon this planet at a particular point in time and space. We have chosen to come here to learn a particular lesson that will advance us upon our spiritual evolutionary pathway. We choose our sex, our color, our country, and then we look around for the particular set of parents who will mirror the pattern we are bringing into work on in this lifetime. Then we grow up, we usually point our fingers accusingly at our parents and whimper, you did it to me.
but really we choose them because they were perfect for what we wanted to work on overcoming. इसलिए तुम खुश मत हो कि तुम्हारे बच्चे को तुमने लाया है. You know, it is what they have come to teach you the lessons you are avoiding to learn. Very nicely said. We learn our belief systems as very little children, and then we move through life creating experiences to match our beliefs. Look back in your own life and notice how often you have gone through the same experience. Well, I believe you created those experiences over and over because they mirrored something you believed about yourself. It doesn't really matter how long we had a problem or how big it is or how life threatening it is. The point of power is always in the present moment. This is what I teach. All the events you have experienced in your lifetime up to this moment have been created by your thoughts and beliefs you have held in the past. They were created by the thoughts and words you used yesterday, last week, last month, last year, 10, 20, 30, 40, or more years ago, depending on how old you are. However, that is your past. It is over and done with. What is important in the moment is what you are choosing to think and believe and say right now. For these thoughts and words will create your future. Your point of power is in the present moment and is forming the experience of tomorrow, next week, next month, next year, and so on. So stop right away the thoughts which are not serving you. You might notice what thought you are thinking at this moment is the negative or positive. Do you want this thought to be creating your future? Just notice and be aware. The only thing we are ever dealing with is the thought, and the thought can be changed. Like said earlier, no matter what the problem is, our experiences are just outer effects of inner thoughts. Even self-hatred is only hating a thought you have about yourself. You have a thought that says, I am a bad person. This thought produces a feeling and you buy into the feeling. However, if you don't have the thought, you won't have the feeling, and the thoughts can be changed. Change the thought and the feeling must go. क्या बोलते हो? This is only to show us where we get many of our beliefs. But let's not use this information as an excuse to stay stuck in our pain. ठीक है ना? The past has no power over us. It doesn't matter how long we have had a negative pattern. The point of power is in the present moment. What a wonderful thing to realize. We can begin to be free in this moment. So, believe it or not, we do choose our thoughts. We may habitually think the same thought over and over so that it does not seem we are choosing the thought, but we did make the original choice. We can refuse to think certain thoughts. Look how often you have refused to think a positive thought about yourself. Well, you can also refuse to think a negative thought about yourself. करना है ये? It seems to me that everyone on this planet whom I know or have worked with is suffering from self-hatred and guilt to one degree or another. The more self-hatred and guilt we have, the less our lives work. The less self-hatred and guilt we have, the better our lives work on all levels. The innermost belief for everyone I have worked with is always, I am not good enough. We often add to that, and I don't do enough, or I don't deserve this.
Does this sound like you? Often saying or implying or feeling that you are not good enough, but for whom? And according to whose standards? If this belief is very strong in you, then how can you possibly have created a loving, joyous, prosperous, healthy life? Somehow your main subconscious belief would have always be contradicting it. Somehow you would never quite get it together, for something would always be going wrong somewhere. ठीक है, तो आज से एक चीज बोलना बंद करना है, आई एम नॉट गुड इनफ, हमें ड्रॉप कर देना है कंप्लीटली. वेदर यू डिजर्व इट और नॉट, जस्ट डोंट थिंक दैट आई डोंट डिजर्व. ठीक है, यू यू आर इनफ, यू आर गुड इनफ, यू आर एक्सेलेंट, और जो भी आपका स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर लविंग, जॉयस, प्रॉस्परस, हेल्दी लाइफ चाहिए, तो ये नहीं बोलना, ये थॉट्स नहीं आना चाहिए. ओके, टुडे इट हैज ऑलरेडी बीन 35 मिनट्स, और मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट और 2 पेजेस बचे हैं, बट आई विल नॉट कंप्लीट इट, आई विल कंटिन्यू इट टुमारो. और ऐसे करके हम ये सीरीज, लाइक देर आर टोटल 15 चैप्टर्स, बट विल टेक 20 days आई थिंक. हम इसको कंप्लीट करते हैं. दिस मंथ इज अ टारगेट टू कंप्लीट दिस बुक एंड get a lot and lot from Louis Hay, because she is one of the best person to rewire your mindset, जिस पे मैं वर्क करती हूँ. एंड आई ऑल्सो, एंड इफ यू आर पर्सनली वांट टू कनेक्ट विथ मी, तो मेरे डिटेल्स हैं. आप एक फॉर्म, गूगल फॉर्म भर सकते हो अपना ईमेल एड्रेस और नेम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ. आई विल कनेक्ट विथ यू पर्सनली, दैट्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. सो just for tonight, think where in the life you are thinking all about your negative, you are getting that negative feelings, और हमें उसको रिवायर करना है टू पॉजिटिविटी. स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट practicing gratitude. The more you are thankful to the universe, the more you'll get what you desire for. So with this coming to an end, have a good night. Bye bye, take care.